हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट द अनटोल्ड कनाडा पावर्ड बाय कैनेडियन विंग्स। और मैं हूं आपका होस्ट मानस सहगल। एंड फॉर टुडेज एपिसोड वी हैव मिस्टर हामिद, जो कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर है। एंड इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस कि व्हाट एक्चुअल इंश्योरेंस ब्रोकर आर, किस वे में वो हमारी हेल्प करते हैं इंश्योरेंस लेने में, किस किस टाइप के इंश्योरेंस में वो डील करते हैं। काफ़ी सारी इंश्योरेंस के बारे में आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टेनेंट इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस। इन सारी इंश्योरेंस के क्या इन एंड आउट होते हैं, कैसे आप एक इंश्योरेंस ले सकते हो, कैसे आप एक ब्रोकर को इन्वॉल्व कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, एंड ब्रोकर आपको किस वे में हेल्प करेगा जब आपको क्लेम लेना होता है। तो आओ डिस्कस करते हैं। सो भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं अपना। और मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि भाई, बीइंग अ इंश्योरेंस ब्रोकर, किस टाइप की इंश्योरेंस में आप डील करते हो? ब्रो मैं करता हूँ कमर्शियल इंश्योरेंस हो गई, ऑटो हो गई, पर्सनल जो कहते हैं, ऑटो, होम, इन तीन जो मेजर फील्ड्स हैं, कमर्शियल, ऑटो एंड होम में। तो कमर्शियल में ये हो गया यार, कभी कभी अपना स्टोर हो गया, बार्बर शॉप्स, नहीं तो कमर्शियल ऑटो हो गई, जैसे टो ट्रक्स हो गया, उसमें भी डील करता हूँ। बट लाइफ इंश्योरेंस का जो होता है वो थोड़ा सा, वो भी एक इंश्योरेंस का हिस्सा है, पर वो इट्स नॉट हार्ड टू डू, पर वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। बट उसके अलावा सब कुछ अपना सारी इंश्योरेंस में डील होता है। एंड इंश्योरेंस ब्रोकर हो तो इस फील्ड में आए कैसे हो गए? हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड? सच्ची बोलूं, टू बी ऑनेस्ट विद यू ब्रो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इफ यू स्टार्ट, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, वही मैं बोलूँ, आई क्या डिड स्टडीज करी? मुझे पता भी नहीं था इंश्योरेंस ब्रोकर होता क्या है। पहले अगर आप मुझसे पूछता ना कि 4 साल 5 साल पहले, भाई इंश्योरेंस ब्रोकर होता क्या है, मैं बोलूँ यार जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो होते हैं। मुझे पता भी नहीं था। तो कुछ साल पहले मेरा बड़ा भाई है, वो इंश्योरेंस में आया, कहता यार, वो टीडी के लिए काम करता था, कहता मैं इंश्योरेंस में जाना चाहता हूँ, ब्रोकर, बिकेम अ ब्रोकर, ठीक है। और उसके बाद उसने मुझे बोला यार, कमीशन में पैसे, इट इज़ मेहनत है, हार्ड वर्क है, पर पैसे भी सही है अगर मेहनत करो तो। मैं HR में था। HR में ग्रोथ नहीं थी कनाडा में, क्योंकि कनाडा या एंड ऑफ द डे राइट, कनाडा में तो अगर आपको कोई भी बिजनेस फील्ड में ग्रोथ चाहिए, USA जाना पड़ता है। और USA में जा नहीं सकता था क्योंकि फैमिली सिचुएशन, फैमिली सब कुछ इधर है, ठीक है। तो मैं बोला यार, अगर ग्रोथ नहीं है HR में तो मैं कहाँ 10-15 साल लगाऊँ, बाहर में पे रेज आए। तो मैं बोला यार, वो तो बंदा तब तक नहीं, इतना टाइम। तो मैंने बोला यार, ट्राई करते हैं इंश्योरेंस। जो सूट किया था सूट किया, यंग एज है, नहीं किया तो आगे चलेंगे। तो सूट करेगी, मैं बोला यार देख लेते हैं आगे सब क्या होता है। पर यही था यार, बस भाई ने मुझे बोला था, उसके बाद भाई की सजेशन लेके उसके बाद ऊपर वाला। यही आपकी फर्स्ट जॉब भी यही रही है? नहीं, फर्स्ट जॉब तो मैंने HR में भी की थी। मैं तो ब्रो 16 साल की एज के काम करूँ, कभी टॉमी हेल्थ फिगर में कभी ज़ारा भी काम किया है। अच्छा। तो छोटे मोटे, कभी मैकडॉनल्ड्स पे भी काम किया है। तो छोटे मोटे जॉब ही करता रहूँ, जो सही अच्छी है। ये नहीं कि कोई भी कहता ना कि कोई भी जॉब बुरी नहीं होती है। जहाँ तक बिल्स देता है ब्रो, वो जॉब है। पर कि एज अ स्टूडेंट जॉब गुजारा हुआ है। तो अब जब ग्रेजुएट हुआ, HR में काम किया 2-3 साल, 2 साल के लो आप, और ग्रोथ नहीं थी। तो हमने क्या, टाइम टू मूव ऑन। जो स्टडी किया तो नहीं सूट किया तो नहीं किया, यू नो। उसके बाद फिर यहाँ पे तो इसके बाद मैं बोला, तो तो सर ये है इंश्योरेंस ब्रोकर में कि अपना काम है। एंड ऑब्वियसली हर एक इंसान को होता है यार, जॉब कितनी साल करोगे आप, 50 साल कर लोगे, 20 साल कर लोगे, यू नो। ये होता है यार, एंड ऑफ द डे अपना कोई बिजनेस हो, बंदे को पता भी लगता है यार मेहनत की क्या वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और दिल भी करता है काम करने को। हर दिन यार सुबह उठ के यार 9 बजे जाना है, 5 बजे ख़त्म शुक्र होगा, यू नो। ये तो यार 9 बजे उठना, बंदा दिल करता है यार, अपना काम है तो दिल करता है उठने को, दिल करता है यार मेहनत करने को, उस चीज़ में। बस वही अपने हाथ का जब काम होता है, बंदे को कहते हैं चलो भाई, वही ना, अपना हाथ का पैशन जिसमें होता है ना काम करने का, तो वहाँ पे काम करने का मज़ा ही अलग आता है। वही ना यार, जब वही कहते ना कि आप जहाँ दिल करता है ब्रो वहाँ पर काम करो, नहीं दिल तो कुछ ढूंढो यार। ये नहीं कि पैसे कहीं ना कहीं से अपना, जहाँ पैशन, जैसे नहीं बोला, जहाँ जो है वो है ब्रो। कहते ना कि पैसों के पीछे मत भागो, जो अपनी पैशन है, सक्सेस है, उसके पीछे भागो, पैसे झक मार के आएंगे ब्रो। तो वो ऐसे ही आएगा। बस वही होगा ना कि जो दिल है, दिल से जब काम करोगे पैसे भी आएंगे, क्योंकि बंदा दिल से काम करता है तो टाइम ज़्यादा लगाता है, मेहनत ज़्यादा लगाता है। तो दिल से नहीं, बंदा कहता है यार शुक्र काम खत्म हुआ, बस मैं घर जाऊँ। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है कि 9 to 5 जो जॉब कर रहे होते हैं, उनका वही होता है कि यार
बिल्स पे कर रहा है Yeah, तो अपना काम ख़त्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से. वो तो है. बट वो मज़ा जो आता है ना जब अपना काम करते हैं जिसमें हमारा शौक है हमारे को हम्म. करने का या जो हमारे को फील्ड हमें अच्छी लगती है उसमें, तो वो दिल से जब काम होता है ना वो अलग ही आता है. वो निखार नशा उसमें. इंश्योरेंस में ये देखो ना कि ऑटो इंश्योरेंस ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, होम तो दूर की बात, ऑटो ले लो. अंटेरियो में तो लीगली ऑटो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए. Yeah. अगर व्हीकल है तो इंश्योरेंस चाहिए ब्रो. हम्म. बताओ इंश्योरेंस ड्राइव करोगे टिकट मिलेगी, टिकट ऑब्वियसली हैक बंदा का नहीं है, It's offense. तो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए. तो ये होगा ना जैसे होता है ना कि ऑब्वियसली एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है. Yeah. तो बंदा ये कहता है यार इट्स नॉट जस्ट अ स्टोर जहाँ बंदे को डर होता है यार मे बी क्लाइंट्स आए क्लाइंट्स ना आए. ऑब्वियसली शुरू में कोई भी फील ले लो, इंश्योरेंस हो जाए जो भी, यू विल स्ट्रगल राइट, इट्स Mhm. नेचुरल, ठीक है. Yeah. बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू कीप गोइंग, कंसिस्टेंटली जाते जाओ, वो ऑब्वियसली बंदे को एक्सपीरियंस भी आता है, टाइम भी लगता है, पर बंदा ना फिर कहता है यार मैंने ये सीखा अपनी गलतियों से, आई वांट टू डू बेटर, यू नो. तो Yeah. वो ऐसा मुझे जैसे टाइम लग गया था, मुझे नहीं कि मैं पहले महीने बहुत, मुझे तो साल लग गया था ब्रो जब मैं कुछ भी नहीं Convince था होने के लिए. कन्विंस होने में. यार मैं कभी कभी सोचता भी था यार शिट यार गलती तो नहीं हो गई यार यहाँ पर ऊपर से थोड़ी जब ज़्यादा मेहनत आई, जो रिटर्न आना शुरू हो गया जो मेहनत का, Yeah. यार इतनी मेहनत की है लाइक वो जो कमाया है वो अब आना शुरू हो गया, तो बंदे का दिल भी होता है यार जो दिल से मेहनत की थी अब तो दिल और भी करता है मेहनत करने अब को. और मेहनत हाँ. करता है. सो एक व्यूअर्स के लिए बताओगे कि भाई यहाँ पे अगर आपको इंश्योरेंस ब्रोकर बनना है तो व्हाट्स द बेसिक प्रोसीजर ऑफ दैट. Bro, to be honest, it's not hard. It's not मुश्किल नहीं है अब. एक लाइसेंस चाहिए होता है. इसका नाम होता है रीबो, रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ब्रोकर ऑफ ontario, ठीक है. Alright. रीबो, RIBO. तो ये इसका लाइसेंस चाहिए होता है. इसके लिए आप महीना 2 महीने डिपेंड करता है ऑब्वियसली आप कैसे स्टडी करते हो, पर स्टडी करना होता है एग्ज़ाम दे के, और आपको जॉब ऑब्वियसली आप डिफरेंट ब्रोकरेज डिफरेंट कंपनी के पास जाओ, बोलो यार आई एम अ न्यू ब्रोकर, बस ये चाहिए. तो ये कोई नहीं कि कॉलेज में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे अभी रियल एस्टेट में तो अब कॉलेज में जाना पड़ता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है. कि इसमें बस ये है कि यार आप वो लाइसेंस ले लो, ऑब्वियसली उसके बाद जॉब अगर लैंड कर जाओगे तो यू गुड टू So गो. ये जो लाइसेंस है वो वी कैन गेट इट ऑनलाइन, राइट? ऑनलाइन, यस ऑनलाइन ले It's सकते हो. not the specific school you have to नो go. यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर, पर आपको एग्जाम देना पड़ता है ऑनलाइन या इन पर्सन. Yeah. उसके अलावा फिर आप स्टडी खुद ही कर लो, बुक्स से ले लो, ऑनलाइन कर लो, जैसा भी आपको इजी लगता What है. are the basic charges Yeah. of this license? When I studied, it cost me around $300, $400. बुक्स आ गई थी 250 की और मैंने कोर्स लिया था 150 का. Almost within हाँ. $1,000 you can be. Bro, you the can be, insurance yeah, person. that's why they say that it's not hard, man. As long as अपनी research करो, देखो कि bro, like, Mhm. I want to get into this. How can I get into this, right? Yeah. Do your research, talk to people, right? And get to know different people. Before I got into this, मैं बोला जैसे मेरा भाई था, भाई के अलावा मैंने 10-15 लोगों से बात की थी यार, लाइक इंश्योरेंस का कैसा बिजनेस है, स्टडी करना है तो कैसा करना है, पर अगर आ भी जाऊँ, हाउ इज़ द अर्निंग्स, हाउ इज़ दिस, हाउ इज़ दैट, तो लाइसेंस कितना हार्ड है लेना, एग्ज़ाम कितना हार्ड है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. Right. तो अपना रिसर्च करके ऑब्वियसली जाओ. इंटरनेट तो हर बंदे के पास है, फ़ोन में इंटरनेट. Yeah. तो बंदा गूगल पे सर्च करे जो भी करना है, तो वो बस Education is really easy right now as the internet is so boom वही ना right now, बहुत right? सोचो So कि you can get anything, any information. वो सोचो पुराने ज़माने में यार कि जिन लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, थी नहीं. अभी तो हमारे फिंगर टिप्स में वो कि गूगल पे सर्च कर यार how to get Now not even just Google right now, like AI is so in the you know, AI, bro. AI is just type anything on the crazy. chat GPT and that software will Bro, give you the Chat everything. GBT will give you anything anytime you want. I Yeah. tried it. I even tried it for some of the insurance stuff, not like to help people, but just to like how to explain people how insurance is, my background. Chat GBT is something people are underestimating because people just say, oh, for essays. Yes, helps Right. you with essays, but bro, it's more to that. Like, if you go to ChatGPT, be like, oh, how do I answer this question on an interview? Or how do I talk to this person? What are some factors I need? मुझे क्या क्या देखना चाहिए? Yeah. ChatGPT will describe the entire thing. Numerous Yeah. of. And according to you, what are the essential insurances a person should have? Definitely home tenant. आपके लिए जैसे I know a lot of people that don't have the home insurance क्योंकि obviously market थोड़ी सी है expensive, especially for young generation. तो tenant में ये होता है कि yes, tenant
ये लाजमी नहीं है फॉर श्योर, पर टेनेट में ये होता है कि वो जो भी अपना कंटेंट होता है राइट, जैसे अपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो ले, ज्वेलरीज हो ले, फॉर कोई भी अगर कपल हो जाता है ठीक है, कंटेंट कोई भी हो ले 40,000 तक कवर्ड हो जो भी ठीक है, वो कंटेंट कवर्ड होता है ब्रो। ऊपर से आगे क्या लो यार, हर एक बंदे के पास नहीं पैसे होते कि अगर कुछ पानी आ जाए घर में या कुछ भी हो जाए, हर बंदे के पास नहीं होता कि यार ये एक जगह से मैं दूसरी जगह मूव हो जाऊँ। तो अगर कुछ डैमेज आ जाए, वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प करती है कि चलो हम आपको होटल देते हैं इतने हफ्ते के लिए, एक हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, जब तक हम आपका घर सही नहीं करते ठीक है। तो वो इसके लिए बहुत हेल्प होती है यार। एंड देन होम भी ऑब्वियसली, होम इंश्योरेंस तो लाजमी है। अगर मॉर्गेज आपकी है, आपका हाउस, होम तो लाजमी है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज आ जाए तो वो ऑब्वियसली जिस बैंक ने आपका फाइनेंस मॉर्गेज किया है तो वो उनको भी तो होना चाहिए कि यार डैमेज हुआ है, वी शुड गेट सम पे आउट राइट। ये दो, ऊपर से ऑटो तो लाजमी है ब्रो। मैं आई कैंट, जैसे मैंने पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते कुछ बंदे को देखा ब्रो, कहता है मैं कार चला रहा हूँ 10 साल से, इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस तो है ही नहीं इसके पास। आपने ब्रो गाड़ी कैसे चला रहा है या लाइक कैसे, कहता नहीं ब्रो मैं तो इंश्योरेंस के बगैर चला रहा हूँ। मैं बोला ब्रो अगर क्लेम हो जाता, कहता है ब्रो मैं बस कैश पे दे देता हूँ जो डैमेज हुआ है। मैंने बोला ब्रो सोच कि कभी लॉस आता है, कभी बंदे को चोट आ जाती है ठीक है, लाजमी थोड़ी कार कोई हमेशा फिजिकल डैमेज हो, लाइबिलिटी भी तो हो सकती है, ह्यूमन कैन गेट इंजर्ड राइट। I'm like what would you do then? Oh but he literally was like I don't know, but मैंने भी सोचा नहीं इसके बारे। Insurance bro, it's not there for insurance companies, insurance is there for you. Liability 1 million है, liability का मतलब as in like बॉडी इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, you're covered कि up to $1 million, कोई भी चोट आ जाए ठीक है, your car is covered। हर एक बंदे के पास नहीं है ब्रो, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है हर एक बंदा, तो इंश्योरेंस उसके लिए जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता 20-30-40 हज़ार का डैमेज अपनी पॉकेट से फिक्स करना, यू नो। तो इट इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर श्योर, बट अगेन आई कीप सेइंग you need to have auto insurance because it helps you, not someone else, you know, it helps you be safe, protected from everything. So कितने साल हो गए भाई आपको इस इंडस्ट्री मुझे तो 3 साल हो गए हैं ब्रो, 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर, पर 3 साल हो गए हैं। और ऑब्वियसली जैसा हम पहले से बोले थे, जब आप लाइसेंस लोगे, ये नहीं होगा यार लाइसेंस लिया तो पहला महीना आपका ज़बरदस्त, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, किसी को पता नहीं कि यार ये बंदा इंश्योरेंस में है, तो अपना नाम बताओ कि यार मैं इंश्योरेंस में, अपने फैमिली को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, आगे से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, यू नो, इट्स लाइक नेटवर्क जैसे नहीं होता, ये कीप स्प्रेडिंग ब्रो। जैसे डोमिनोज का जैसे होता है, एक डोमिनोज को आप फॉलो करो, कीप फॉलोइंग डाउन राइट, तो वैसा हो गया ब्रो। आप एक बंदे को इंश्योरेंस दोगे, सर्विस अच्छी दोगे कि वो अगला अपने दोस्त को बताएगा कि यार इस बंदे ने मुझे, वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली, वर्ड ऑफ माउथ यार, एवरीथिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। बट ऑब्वियसली डीलरशिप से भी बिजनेस आता है, दैट्स नॉट द थिंग, बट डीलरशिप के साथ अगर आप अच्छा रिलेशनशिप रखोगे, so it's one of those things, yeah, like dealerships like, yo, this guy is a good person, let me send him the business, he takes care of me, I take care of him, you know, definitely। तो उस हिसाब से ना, it's just one of those things। but insurance में bro मेहनत है, ये नहीं कि आप बैठे बैठे 9 to 5 जॉब नहीं है, कभी 9 to 9 है, 9 to 10 है, long hours, like 12, मुझे भी 3 साल हो गए, I still put 12 hours a day bro, it is long hours, but you get to a point where you get comfortable। yeah so इतने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है ब्रो, you have, so do you have any story regarding the insurance in which you got the really good basically you saved the one of the client in terms of insurance? Yeah man, जैसे मैं एक client है, he was getting insurance from outside around $1,100, 1150 किलो आप ठीक है। मुझे किसी क्लाइंट ने रेफ़र किया था कि यार ये मैं जानने वाला कज़न ब्रदर है कि इसकी आप थोड़ी मदद कर दो। हाई रिस्क क्लाइंट फॉर श्योर, हाई रिस्क क्लाइंट, 4-5 टिकटें ली इसने ठीक है रैकेट पे ऑब्वियसली, और एक क्लेम था, 1-2 क्लेम थे, तो ऑब्वियसली बंदा कहता है यार इट इज़ अ हाई रिस्क क्लाइंट, तो डरता भी है कि व्हाट इफ आगे पेमेंट ना कर पाए कुछ भी राइट। पर मैंने इसकी इंश्योरेंस की 800 में, 700 में ठीक है, पर मैं उसको दे सकता था 1100 भी दे सकता, 1000 भी दे सकता था राइट। पर ये था यार कि 700 में अगर किसी की हेल्प हो रही है, वाई नॉट, यू नो, कि वो 300-400 जहाँ बचाएगा, वहाँ से क्या पता किसी और के बिजनेस मुझे आ जाए ठीक है।
तो वो मुझे अभी उसका कल ही फ़ोन आया था, कहता भाई थैंक यू सो मच आपने मुझे, कि मैंने उसका पिछले महीने किया, कहता भाई थैंक यू सो मच मुझे आपने इंश्योरेंस दिया, सब ने मुझे डिक्लाइन कर दिया था। तो हम लाइक भाई देखो मेक श्योर यू ड्राइव सेफ, बट वो कहता मैं तो इंश्योरेंस के अगेन लाइक वो आ गया, वो कहता आई वाज गोना ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस। I'm like bro get इंश्योरेंस जितना देना दो, पर डोंट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस, डोंट ड्राइव विदाउट द इंश्योरेंस। क्योंकि उसका ये था यार, जो क्लेम उसका हुआ था उसके बचाए की गलती भी नहीं थी। ही वाज स्टैंडिंग एट अ सिग्नल, there was a car in front of him, but Okay. there was someone came from the back and hit him, and when his car hit him वो उसकी कार आगे जाके लगी। Yeah. So obviously automatically अगले बंदे को लगा, तो पिछले so इंश्योरेंस कंपनी को ये था कि उन्होंने ना सबको एट फॉल्ट डाल दिया था पिछले दो को। so इसकी गलती भी नहीं थी, but it is what it is, right? So yeah, तो हम लाइक जान बंदे की ऐसा कोई सिचुएशन हो, obviously हेल्प करने का दिल भी करता है, but you should yeah. So I need to ask, like, if somebody is getting the insurance regarding the car or medical or life or anything, so do they consider banks and other companies directly, or they should involve the insurance broker in between? So how this thing works and why we should involve those? So let's say TD insurance, TD has an insurance branch, okay? TD does insurance. If you want to get in touch with a TD insurance agent, you have to wait in line for 2 hours. Okay. Let's say you get in an accident, you're like, damn, I need someone, I need to talk to right away. Waiting 2 hours on the spot to get to talk to someone is ridiculous, man. 2 hours goes by, people go and come back. You could be hurt, you could not be hurt, right? But it's one of those wait times. That's one of the advantages that, if like for example, take me, I still give out my cell phone number to my clients. I'm like, in case you ever need anything, please call me. Matter of fact, let's take this. Before I came into this interview, I was in my car. As I was getting out, a client called saying that it's a weekend, by the way. So if it was TD, they wouldn't. They were like done. It's 5 o'clock. 5 बज गए, घर जाना है. Yeah. उसने मुझे फोन किया, हमद भाई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया. What should I do? I told him like, you're gonna do this, go to collision center, report and everything. I guided him through, right? So as a broker, I have a responsibility to guide you through situations like if you missed a payment, if you get in an accident and whatnot. But with TD, they're like, oh, even if you mention them, oh, what if I got into an accident? What should I do? They're gonna record it. They're gonna start the claim automatically. Okay. But as a broker, if you're like, oh, I got in a claim, but I'm not sure I can maybe pay off the record and whatnot out of claim insurance companies. It's a minor damage. I'll be like, yeah, go for it, Yeah. But if it's a big damage, if someone's hurt, go through insurance. But with agents, it's just one of those things. That's what there's a difference between agents and brokers. Agents are people who work 9 to 5 or in a call center. They get salary. They don't care if you missed a payment. They're just working for the company. They're just working for the company. They don't care if you're hurt, if you missed a payment, nothing, know. But as a broker, it's one of those things that we make commission, but we're there to help you guys out. We're there to help people out, right? Weekends, weekdays, whatever it is. If you have my cell phone number, you can reach out. If you like, obviously, if you don't want office lines there too, but it's just one of those things where it's more personal. It's more personal to you. It's more service to you. More service to you. Yeah. एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि why car insurance are so important in Canada, and what are the factors that determine the price of car insurances? So the reason, forget Canada. Let's talk about Ontario, specific Ontario. Okay. Yeah. Let's talk about specific Ontario for now. And then we'll go. Ontario. The reason is because first of all, it's legally required. Secondly, because again, bro, if you get in an accident, right, and let's say you hit someone, who's gonna pay for that? How do you think you're gonna be able to? And let's say you hurt someone, right? किसी का बाजू, arm, जो भी चोट आ जाती, how are you gonna pay for that? The procedures, the surgery, the test, it's not $500, it's not $1,000, nothing. It's like $50, $60, $100,000 north of that, right? You're not gonna be able to afford that, right? So it's gonna be hit and runs, stuff like that. So that's why, to prevent those. Secondly, to again, like, protect yourself, man. Like, if you get in an accident, right? Yeah. If you get in an accident, you will be able to fix your car, right? And you will be able to see, okay, this is the damage. This is how it's gonna cost me to fix my car, and the insurance will pay this much. If you're at fault, right? Most of the time,
people deductible is $1,000, right? So let's say there's a loss, कह लो loss 20,000 का आता है, ठीक है? Okay. अगर deductible आपका $1,000 है, ठीक है? You just have, and you're at fault, ठीक है? You just have to pay $1,000 out of your pocket. बाकी जो 18,000 जितना भी लॉस है वो इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. या ऑब्वियसली हेल्प भी होती है, यू नो, लाइक $1,000 तो बंदा पे कर देता टू अवॉइड दैट मेजर डैमेज, राइट? मगर नॉट एट फॉल्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इंश्योरेंस कंपनी तो हमेशा कवर करती है, राइट? ऊपर से ब्रो वो ही होगा ना कि ये ना, जब कहते हैं ना रोड पे जब यू ड्राइविंग, बी केयरफुल, ड्राइव सेफ, बिकॉज आप अगले बंदे की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, यू नो, यू कैन ड्राइव लाइक अ मैनियाक recklessly. Yeah. Obviously drive careful and whatnot, but make sure you're insured, but make sure you're always taking care of how you drive and what's going on with your car and everything. So एक चीज़ जो है जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कार इंश्योरेंस के प्राइस की, सो क्या ये कार टू कार भी वेरी करते हैं, क्या लोकेशंस के ऊपर वेरी करते हैं, या जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है, जो पर्सन वो इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस ले रहा है, क्या उसके स्टेटस के ऊपर भी फर्क पड़ता है? लाइक इफ somebody student, then and he's taking the car insurance, or somebody has the PR or the citizen of the Canada, ठीक है? so उस पे कैसे? So let's break it down to part, ठीक है? पहली बात है car to car. Yes, let's say Civic insurance, obviously Brampton में आप चले जाओ, Civic insurance is much higher than कह लो आप Nissan ले लो, ठीक है? Okay. Civic's insurance much higher than a Nissan because Brampton में ज़्यादा Civics हैं, Nissans कम है, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी का ये होता है कि यार जब हम वो एवरेज देखते हैं कि there's more Civics being driven on the road, so उनको ये होता है कि more Civics are being driven on the road, damage Civics का ज़्यादा होगा, तो to repair them is going to be more क्योंकि parts कम हो जाएंगे, ठीक है? In that sense. Whereas if you take a Civic and you go to Ajax, ठीक है? Exact Civic आप ले लो, Ajax लेके जाओ. I'm not saying insurance will be बहुत सस्ती हो जाएगी, नहीं कि यार ब्रैम्पटन आप 500 दे एजेक्स में आप 100 दोगे, ऐसा कुछ नहीं, but it will be cheaper क्योंकि एजेक्स में obviously population कम है, secondly number of cars कम है, Civics वाली especially, right? So everything that factors matters too, ठीक है? तीसरी बात है कि your record is determined by your tickets, suspensions, your claims. Okay. And there's a thing called cancellation for non-payment, ठीक है? Cancellation for non-payment is कह लो आपने इंश्योरेंस ली है, ठीक है? ठीक है. और आपकी पेमेंट मिस हो गई, इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपकी पेमेंट मिस हो गई है, you have one more chance to pay your thing, your monthly premium, आप कहते हैं मैं पे करना नहीं है, you keep ignoring insurance company, तो आपको कैंसिल कर देती है for non-payment, और that stays on your record for 3 years. तो अगली इंश्योरेंस कंपनी को फिर ये होता है कि इसने अपनी पिछली इंश्योरेंस कंपनी को पैसे नहीं दिए, डिफॉल्टर है, तो हमें कैसे देगा, राइट? यू नो, तो इसलिए थोड़ी सी इंश्योरेंस बढ़ा के देते हैं, ठीक है? और दूसरी बात है कि जब क्लेम होता है, स्पेशली एट फॉल्ट, नॉट एट फॉल्ट तो मोस्टली नहीं अफेक्ट करता है रैकेट को, पर एट फॉल्ट होता है कि यार 3 क्लेम्स हो गए पिछले 4 सालों में, हर एक साल क्लेम किया, लाइक हो गया एट फॉल्ट क्लेम हर एक साल, लाइक यू नो कैसे ड्राइवर, यू नो, तो इन दैट सेंस के एट फॉल्ट, क्योंकि एट फॉल्ट क्लेम होता है इसका मतलब कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो उस टाइम थी उसने पैसे दिए दूसरे बंदे को भी, जो दूसरे बंदे को, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ेगा, राइट? तो अगर जो इंश्योरेंस आपकी अगली जो कंपनी इंश्योरेंस देगी उनको ये होगा यार we might have to pay out of our pocket, so why, you know, like we have to get our money back, you know, make it worthwhile, right? So, तीसरी बात है, third thing is tickets. People say parking tickets don't come on your record, right? That's a different thing, but speeding tickets, distracted driving, ठीक है? लोगों को ये लगता है हमने तो पे कर दिया तो हमारे record पे नहीं आएगा, पे कर दिया that means it will come on your record, ठीक है? Because when you pay you're convicted. So let's say अगर आपकी 2020 में टिकट आई थी, ठीक है, but that ticket's not gonna come on right away. वो डेट पे होता है कि आप convicted, like पुलिस जब कोर्ट जो भी है उन्होंने कब डिसाइड किया था कि you're gonna be convicted for that, ठीक है? So that matters a lot too. That stays on your record for 3 years. Doesn't matter if you paid or not. You टिकट मिली है तो मिली है, ये नहीं कि पे किया नहीं किया, that's your choice, right? वो आपके record पे जो भी है, पर अगर टिकट मिली है तो मिली है, it's gonna come on your record, you know? So stays on your record for 3 years. 3 साल के बाद थोड़ी ड्रॉप हो जाती है ऐसा obviously, but yeah. So और what about the person status? वो PR, no, as a student कह लो कि आप student आए obviously, नहीं आए, you won't have insurance experience, ठीक है? Right.
So it doesn't affect your insurance, but if it's your first time getting insurance, it will, because you're new. Obviously, you came as a student, so it's your You first don't time getting have insurance. your financial That will affect. background. But you being a PR or student or resident, nothing affects that. Just your insurance experience, your driver's license experience, that affects it, right? Insurance experience, as in like how long you've had your insurance for, how many claims you've had, how many at fault claims you've had, right? And driver's license, when did you get your tickets? When did you get your tickets, if you had any? And then when did you get your licenses? How long experience did you transfer from India and whatnot? So that factor is the one that matters, right? Not your PR status, not your student, nothing like that. Just the experiences, man. Nice. And you already shared one of the reason for the high insurance rate. Is there any other reason also? Because of that, the insurance rates are high in Brampton, North York, or other. So let me tell you places? a funny story. This is funny because a lot of people don't know about this or don't think about it. Yeah. Brampton was not expensive. Brampton insurance used to be cheaper than most of the other places in Ontario. But since it was that cheap, a lot of people that used to stay in Scarborough was expensive, right? People that used to stay in Scarborough, they were like, oh, we live in Brampton because Brampton insurance was cheap. Yeah. So a lot of people got their fake address transferred to Brampton. Oh, we live there. So a lot of population got that, started moving their insurance system in Brampton, So when a lot of people moved there, Brampton started growing. Brampton started having more people. So that's how it became expensive. And then when people started coming more and more accidents, right? Right. But before that, it was not cheap, man. It was one of those things where, when you say, oh, I live in Niagara Falls, so cheap. Brampton was one of those cheap areas, man. But a lot of people used saying that, oh, Brampton Sesta is cheap, we'll move there, Yeah. That's how it increased. Just say I have a client. He came from US, matter of fact, Okay. Lived in US for like 5-6 years. And he's like, bro, I was paying $60 in US for insurance. I laughed. I was like, bro, $60? Are you ridiculous? I don't have a client that pays $60, कितने साल पहले दिया थे वो $60? Bro, बाद में जब मैंने इसकी थोड़ी सी research की, and then he told me about some of that, कहता है, my liability was $50,000 in US. In Canada, Ontario especially, your liability is $1 million. Oh. $50,000, $1 million, bro. Big, huge difference. Yeah, huge $50,000 that won't probably even cover major damages of your car, Yeah. So it's a huge difference, bro. So when I told him, I'm like, that's why your insurance. And secondly, he's like, oh, bro, I'm in Brampton, it's not bad, like Desi people are here, brown people are here, the Desi people, the good drivers, I'm like, bro, Brampton is known to be the most expensive area in Canada. Not Ontario, just Canada, man. So that's why they're like, if you think your insurance is high, but look at the factors where you're living, what kind of driver you are, what kind of coverages you had, Yeah. Like there's two coverages. It's called full coverage or third party. Okay. Full coverage includes your rental vehicle deductible, which we were talking earlier, that if you ever do get into an accident at fault, right? वो होता है कि you just have to pay $1,000 out of your pocket, right? Yeah. And the rest insurance company covers. And then let's say आपका accident होता है and you have to send the car to a mechanic for 2 weeks, a week, जो भी time, ठीक है? Yeah. वो insurance company आपको rental vehicle भी देती है, ठीक है? अच्छा. So third party भी नहीं देती. Third party is like when you get into an accident, you pay for your own physical damage. You manage your own everything. We just pay for if you ever get hurt, liability उसे कहते हैं. We just pay for if you get hurt and whatnot. So this car insurance also include अगर किसी को एक person को physical damage होता है. Yeah. तो वो भी include. Yeah, वो भी include है. कार ये तो car insurance ये भी include है, bro. अगर किसी के घर पे आप घर में जाके drive कर दो, you break down their wall. Yeah. That'll be covered too. या बीच में अभी स्कारब्रो में काफी सारे वो देखे कि स्टोर के अंदर ही सीधा गाड़ी चली गई. एग्जैक्टली. तो सोचो अगर जिस बंदे के पास इंश्योरेंस नहीं है वो कहे वो बोले वो मैं कहाँ से मेरा तो स्टोरी बंद हो जाएगा. तो दो फैक्टर्स आ गए, स्टोर की इंश्योरेंस और कार की इंश्योरेंस, राइट? स्टोर की इंश्योरेंस तो कवर करेगी, बात फॉर द कार इंश्योरेंस. कार में डैमेज हुआ उसको भी, और उसको भी सब कुछ, जो ड्राइवर है अगर उसको भी कोई फिजिकल डैमेज आया होगा तो. जैसे ब्रो मेरा क्लाइंट है, टू बी ऑनेस्ट, nice client, amazing. He's young, 24 के, ठीक है? 24 young ही होता है एक साल से ना. तो he doesn't have any claims. Okay. But he has tickets. He has 4 tickets on record. But tickets ऐसी ही हैं कि
10 kilometers over the speed, Oh. stop sign, stuff like that, ठीक है? Yeah. But he has tickets, Yeah, but it will, right? yeah, it will Tickets are remain for tickets, 3 right? years Convictions are convictions. तो मुझे कहता है भाई यार टिकट कोई ना लाइक ये टिकट क्यों, मैंने तो पे कर दिया भाई ये वगैरह. मैं बोला भाई तूने मुझे थोड़ी इंश्योरेंस करके थोड़ी पे किया, यू नो. कहता नहीं भाई पता क्या ये, बट ऑब्वियसली उसका ये था कि जो उसका भी सेंस बनता है, कहता है भाई टिकट तो मेरी आई, यू नो, लाइक हाँ. मैंने किसी को हर्ट नहीं किया. बट लाइक ब्रो इंश्योरेंस कंपनी तो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क हो गया बिकॉज दे डोंट नो हाउ यू ड्राइविंग, यू नो, टू स्पीड कर सकता नहीं कर सकता, यू नो, व्हाटएवर. तो इन दैट सेंस लाइक वो टेक अवे ये कि ब्रो इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन यार कि कैसी इंश्योरेंस आपकी कैसी नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका रिकॉर्ड कैसा है. लाइक आई हैव लाइक सॉरी फॉर अनदर बट आई हैव अनदर स्टोरीज दैट मैंने क्लाइंट की इंश्योरेंस की, बेटा बाप, ठीक है. बाप ने Okay. मुझे फ़ोन किया, कहता मैंने अपने बेटे को ऐड करना है इंश्योरेंस पे. मैं हाँ. बोला चलो ठीक है कर देते हैं सर. तो किया मैंने बेटे की इंश्योरेंस हिस्ट्री पुल की. इंश्योरेंस हिस्ट्री में कोई क्लेम नहीं. मैं बोला ज़बरदस्त यार, इंश्योरेंस हिस्ट्री भी है, क्लेम भी नहीं है, पर ज़बरदस्त. लाइसेंस हिस्ट्री पुल की, 3 टिकटें आई. मैं बोला सर जी आपके बेटे की तो 3 टिकटें तो पे ऑफ हो गई हैं, वो टिकटों का क्या हाँ. फ़र्क. मैं बोला सर जी पे ऑफ तो हो Record गई पे तो पर है. साल तो रहता है Yeah. पे ऑफ होने में या ऑफ होने में. नहीं वो 2 साल हो गए हैं, इतना काफ़ी है, उन्होंने मैं बहुत कर लिया है, बहुत ले लिया इंश्योरेंस. बोला सर जी टाप कौन, मैं डालता ही नहीं पर डालनी पड़ी नहीं है. तो उस हिसाब से वो कहता नहीं वो, एंड देन वो आपसे गुस्सा हुआ कि मेरे पे भी गुस्सा हुआ कि ये कैसी है, नो, वो गालियाँ निकाली जो भी, ये कैसी है वो कैसी है, नो, कि मैंने बोला देखो आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर्स इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती, ब्रोकर्स आर ऑन योर साइड, Yeah. ठीक है. तो आई लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गालियाँ देनी तो सेंस नहीं बनता ब्रो. हम लाइक काम है भाई, आने क्या करें हम? गालियाँ दे अपने बेटे को समझाओ यार, हाँ, अपने स्पीडिंग ना बेटे को दे भाई, हमें क्यों दे रहा है? बोला अपने बेटे को बोला मर्सिडीज अपनी होली रखे, you know? होली रखो भाई. तो बाद में मैंने से समझाया, काम डाउन किया. मैं बोला देखें आपकी ये सिचुएशन है, आपकी प्राइस इतनी आई थी, बट नॉट टू वरी कि आप सिंस आपका रिकॉर्ड इतना साफ है, मैंने आपके बेटे को ना आपके साथ डाला है, नॉट सेपरेट पॉलिसी, आपके साथ डाला है, तो इतनी प्राइस आ गई है. तो थोड़ा सा ठंडे होके कहते हैं हाँ चल ठीक है मैं इंश्योरेंस कर दूँगा. तो वो होगा ना कि बात करने का एक तरीका होता है लोगों से कि यार कैसे बात करूँ. Yeah. कोई अपनी एज का तो कैसे बात करना है, कैसे समझाना है कि ब्रो लाइक स्पीडिंग ना करे, बंदा बन, लेकिन इंसान बन. इंसान बन. पर कोई अगर अंकल जी हैं जो कुछ भी, उनको ये क्या अंकल, यू नो, लाइक ये सिचुएशन है, ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सेंस बनता है, यू नो. तो वही है ब्रो, बस टाइम लग जाता है कई बार. टाइम लगता था ब्रो. वही ना ब्रोकर की ये कहता हूँ ब्रो 9 to 5 नहीं है ब्रो, पूरा दिन है ब्रो. रात को ही फोन आ गया अंकल ब्रो जी मुझे क्लाइंट्स का फोन आता है 5 बजे 5 AM ब्रो, का सुबह के. ओ भाई आप अभी काम शुरू किया. मैं बोला भाई तो कौन सा बंदा अभी सोने तो दो भाई. मैं बोला कौन सा बंदा, कहता नहीं भाई हमें इंश्योरेंस चाहिए भाई, ओ हमारा ये हो गया भाई. अरे भाई हम लाइक ब्रो लाइक वो है पर बंदा टाइम तो देख टाइम ब्रो, तो देख you know? ब्रो क्या कर रहे हो. सो ब्रो क्या सजेशंस आप दोगे हमारे व्यूअर्स को जिसकी वजह से कार इंश्योरेंस को हम कम कर सके भाई. जेनरिक सजेशंस नहीं चाहिए, जो एक आपके सजेशन चाहिए जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हो, हाँ. और किस तरीके से बाकी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉलो करे वो बंदे उनकी, सो डेट उनकी जो कार इंश्योरेंस है वो कम हो सके. ठीक है. तो मैं ये होता कि अगर पहली दफ़ा इंश्योरेंस लेने लगे हो, ठीक है, ओके. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिफरेंस है, फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस एंड फर्स्ट टाइम कार बायर, ठीक है, ओके. 2 डिफरेंस. कभी कभी यू सी देम टुगेदर. या फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस का ये होता है कि आई टेल देम भाई देखो अगर पुरानी कार है तो आई गिव देम सजेशन. अगर 2002 की कार है, हम लाइक मैं आपको 2 कोड देता हूँ. एक देता हूँ फुल कवरेज, ठीक है, फुल कवरेज में ये जो भी है समझाता हूँ कि आपका ये रेंटल व्हीकल सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है. पर मैं उनको 1 वे भी समझाता हूँ कि 1 वे में ये है कि भाई देखो 2002 की कार है, फिक्स कराने में तो सस्ती है, 2002 नहीं तो लाइक आगे लग जाना, यू नो. हाँ. तो उनको ये भी मैं ये नहीं कहता यार, ऑब्वियसली फुल कवरेज में पैसे ज़्यादा है फॉर श्योर, राइट, पर ये भी ना कि अगला बंदा कैसे अफोर्डेबिलिटी देखा, ठीक है. तो मैं हमेशा ही कहता हूँ अगर आपके पास अभी नहीं है अफोर्डेबिलिटी, स्टार्ट विद थर्ड पार्टी फाइनेंस कार, फिर तो आपको लेनी चाहिए फुल कवरेज, क्योंकि फाइनेंस में तो लीगली फुल कवरेज रिक्वायर्ड है. पर मैं ये सजेशन बस देता हूँ कि यार लाइक ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज यूर ड्राइविंग एंड यूर नॉट टिकटें मिल रही हैं एंड आपको लगता है यार मैं पे ऑफ कर दूंगा, इट्स नॉट गोना अफेक्ट माय रिकॉर्ड, इट विल फॉर श्योर बिकॉज स्टेज ऑन योर रिकॉर्ड, राइट. सेकेंडली मैन हैव इंश्योरेंस, बिकॉज जब इंश्योरेंस के बीच में जो गैप भी आता ना
कि वो गैप कह लो साल का हो जाए 5 महीने का, जितना आप जो मर्जी सोच लो, ठीक है, वो गैप भी मैटर करता है। इंश्योरेंस का कह लो आपके पास इंश्योरेंस थी 2016 में, ठीक है, ओके 2016 से लेकर 2018 तक आपके पास इंश्योरेंस थी, तो आपने 2018 के बाद यू जस्ट स्टॉप्ड इंश्योरेंस, ठीक है, या एंड सेम कार सेम सब कुछ, आप कहते 2020 में मैं इंश्योरेंस वापस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2018 से 2020 में जो इंश्योरेंस हिस्ट्री में आपका देखेगा सेम कार सेम सब कुछ है, राइट, पर इंश्योरेंस नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो बोले कि यार लाइक 2 साल क्यों, like, क्या खाया था 2 साल ड्राइविंग, ऑब्वियसली यू वर ड्राइविंग, यू नो, Yeah. ये नहीं कि तू गाड़ी Yeah. बंद करके रख रखी थी 2 साल 2 साल के लिए तो ड्राइविंग कहीं ना कहीं तो गया था ना, कहीं तो ग्रोसरी तो गया। कहीं ना गया ही Right, होगा ना कि right. यू नो, तो वही होगा ना कि यार कि जब वो फिर शक आता था कि व्हाई वर यू नॉट इंश्योर्ड, शक आता कि डिड यू गेट एन एक्सीडेंट, बताया नहीं, डिड यू डू दिस डू दैट, यू नो, तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं। मेरी टिप ये होगी ऑब्वियसली कि look where you're living, right? Your area matters. Brampton, Scarborough, North York, right? Markham, now Pickering, and ऊपर से कि obviously drive extra careful. But my main, very not a lot of people know this is dash cam, bro. Yeah. Very important, very important. Not because किसी और लिए अपने लिए अपनी protection के लिए ना, it's very important because two things. First of all, dash cam होता है, जब मैंने एक वीडियो देखी थी कि someone was driving at 30 kilometers 35 kilometers on a local street, ठीक है, और बच्चा एकदम से आगे आ गया, ठीक है, तो obviously बच्चे को लगी, पर इतनी नहीं कि बहुत लगी, you know, like फील तो होता है, obviously बच्चा भी ऊपर से इंसान है, right? तो फील तो होता है, तो बस बंदे के पास dash cam था, it proved that he wasn't speeding, उसने जाम नहीं किया, कुछ सडन नहीं था, he was just going 35 kilometers which is below, ठीक है, तो he had a dash cam to prove that okay मैं speed नहीं कर था, I didn't do anything sudden, you know, I was driving safe, right? बच्चा बस एकदम से आ गया था, क्योंकि वो उसके पेरेंट जो बच्चे का था, he started blaming him like, oh तुमने जानबूझ के स्पीडिंग की थी, तुमने जानबूझ के किया था, you know, तो I'm like yeah, like if you look at that sense, right, ना dash cam होता, he would have been proven guilty, like bro, how do we know you weren't speeding, right? How do we know you weren't going 7 kilometers, right? But he had that to prove, okay, yeah, I was, you know, driving safe and everything. So that's one reason for sure to like look at, like when you get into an accident, you have evidence, right? Okay, if I was at fault, if you weren't at fault, to determine, because when you get into an accident, all the people that are involved, they will say that they're not at fault because they don't want to pay, right? Right. So when you have evidence to back yourself up, okay, you're actually not at fault, it makes your claim much more smoother, much more easier, and it helps you obviously prove that you're not at your fault, right? Second thing, there's 2 dash cams, right? There's one for the outside and inside, and one for both. A lot of thefts are happening in Brampton, GTA, you say, we're not Lexus, Toyotas, Hondas, everything, right? If you have dash cams and they're plugged in and working, right, you could probably get evidence of someone that broke into your car, their face, anything about them, right? Yeah. Which is leading to my another point. Insurance companies have been sending out memos, right? Most of the insurance companies have been sending a memo saying that please install anti-theft device in your car. Okay. If you don't, we will charge you $500 extra. Oh. Which is a lot. $500 both them, bro, right? So, like, I had a client 2-3 दिन पहले, थोड़े से एज के हैं, right? Middle age, not like too in middle age, right? 50s में, ठीक है, 45, 50s में, right? Coming out of grocery store, like normal coming out of grocery store, कहता है, I came out of grocery store, I saw my tail lights on. Yeah. Tail lights देखिए, I ran towards my car. I'm like, मैंने तो car turn off की थी, like it doesn't make sense. Right. Ran towards my car. कहता, I saw literally someone coming in the car, hopping in my car, and driving off. He's like, I ran behind my car. I couldn't do anything. Right. And he's like, he's like, I don't know what the hell's going on. But I'm like, then I asked him this. And just, I thought it was a normal question. I'm like, look at your app, see where the car is located, and call the police and tell them, right? Get that? Whatever technology they have, it shows on my app the car is still parked there in the same plaza. Oh. But the car's gone. So even if you were able to say, like, you're at home and someone steals your car and you're like, oh, you know, I'll check my phone if my car's still there. Yeah. It'll show it's there, but it's not going to be there, bro. It's not there. Yeah. So that's what, like, those are 2 small or major devices, if you say, but
advices that not a lot of people pay attention to is that dash cam and secure and anti-theft, bro, because Lexus, Toyotas, and Hondas and Acuras are the most stolen cars in GTA. You know, so that's रिक्शा ले लेना चाहिए bro, वही मैंने अंकल को बोला, अंकल को थोड़ा मजाक किया था, मैं बोला अंकल जी रिक्शा का टाइम आ गया, कहता ना कर ब्रो, ना कर बेटे ना कर। मैं बोला अंकल जी रिक्शा ले लेना चाहिए, बंदा गाड़ियाँ ही ना ले तो। मैं बोला अंकल जी नॉट प्रॉब्लम, आपकी इंश्योरेंस कवर्ड है, क्योंकि कवरेज होती है इंश्योरेंस पे, स्पेशल ब्रांड न्यू कार हो ना उस पर ही, उसका नाम होता है लिमिटेड वेवर, 43 लिमिटेड वेवर। ओके, उसमें ये होता है इट्स ओनली अप्लाई टू ब्रांड न्यू कार्स, ठीक है, नॉट यूज नथिंग, ओनली ब्रांड न्यू कार्स। उसमें ये होता है कि लेट्स से वो कवरेज है, तो लेट्स से योर कार गेट्स स्टोलन, ठीक है, सो इफ यू हैव द कवरेज, वट एवर अमाउंट यू पेड ऑन फॉर द कार एट द टाइम, यू विल गेट दैट बैक। लाइक 50 हो गया, 40,000, व्हाटएवर इट इज, जो भी अमाउंट है वो वापस मिलेगा, ठीक है। बट लेट्स से अगर टोटल लॉस भी हो जाता है, टोटल लॉस राइट ऑफ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है वी कैन फिक्स इट, हम पैसे देंगे, ठीक है। तो अगर वो कवरेज है तो वो फिर आपको जितने पैसे देते हैं वो ही वापस मिलेंगे। पर अगर वो कवरेज नहीं है तो दिल जस्ट गिव यू व्हाट द मार्केट वैल्यू इज, इट कुड बी लेस, जो भी है, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। लेट्स से आपने 50,000 की कार ली है बट द कार इज वर्थ 30,000 नॉट 30,000, they'll give you 30,000 probably, they'll be like can't do anything, whatever the worth is right now at the current value market of the cars right now, they'll give you that. So that's why like another advantage of having a broker, they go through those coverages with you, right? Like, oh sir, do you like use a brand new car, do you have this coverage, do you want this coverage, you know, like blah blah blah, whatever, right? There's more men driving cars nowadays, but that's how it works. Like major accident अगर रिलेट होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं आग लग जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, या वाटर डैमेज होता है उसके अंदर, या इसी तरीके के, तो इंश्योरेंस क्लेम डिटरमाइन कैसे करती है कंपनी? सो दो होती है ना, होम इंश्योरेंस डिफरेंट होती है, राइट। होम इंश्योरेंस में तो बहुत ज़्यादा कवरेजेस होती हैं, राइट। अगर आप होम ओनर, ठीक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा कि अगर एक कवरेज होती है गारंटीड बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, कह लो घर को कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, जो भी है, पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी देगी जितना जो खर्चा होगा वापस बिल करने में, मार्केट वैल्यू नहीं, जो खर्चा होगा बिल करने में, मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, जो भी, राइट। अच्छा, कि मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट होती है, राइट। तो दे विल गिव यू मनी जितना होगा टू रिप्लेस द हाउस, ओके, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज वो ना फायर अगर हो जाए, कुछ भी हो जाए, you're definitely covered by insurance company, and you don't get determined by insurance company at fault, not at fault easily when it comes to property, ठीक है, क्योंकि कह लो water damage for example, right, but water damage आया because you left a tap on, okay, तो वो damage different होता है obviously, क्योंकि वो दिखाई देता है, like थोड़ा सा drop होता है, but कह लो कोई water damage आता है and it's from down sewer में down ज़मीन से निकला, right, तो उसमें थोड़ा सा दिखाई दे देता है, they come for inspection and everything, right? So that's one thing. Insurance company does not, like, कोई भी insurance company ले लो आप, right? They always do their inspection, they always do their due diligence, right? Because that's how it should be. Obviously, they're the ones paying, right? It's not that they're doing it for free. Same thing goes with tenant insurance too. If there's a content, let's say you have, with my insurance company, the minimum content we cover is $40,000. Okay. So let's say you're like, "Bhai, $40,000 is good, okay, but your camera, for example, is worth, let's say, $2,000, for example, right? And someone steals it, okay, or it gets damaged by natural water costs, okay, and you're like, "Bhai, my camera is worth $2,000. Like, what should I do? Kya karna hai?" It would be covered because you have coverage up to $40,000 for the contents, right? Okay. So stuff like that's covered, but obviously it depends on how it was damaged, right? They will definitely ask you questions. They won't just give you money. They'll definitely ask you, okay, was your tap running? If you're like, oh, yes, it was. So maybe the water came from the tap, you know? Acha, neto, did you get your sewer lines checked up and stuff like that, you know? And like all the stuff is determined on that, but for homeowners especially, which is a lot of people out there, there's inspections, man. Every insurance company has a inspector that comes and checks. Inspections go down, whether if your house is worth more than $1 million or whatnot. There's a lot of things that go into it. They come determine when your house was built and everything, and a broker knows some of that information too. Yeah. So it's nothing too natural. You won't be.
for property is nothing too clear at Right. fault, not at fault, but it's just determined based on like what was going around you when that incident happened. Mhm. Like again, like if the tap was running, if tap Right, wasn't right. running, you know. So This comes under the home insurance, right? yes, Okay. So- And like, of course, इतने सारे हर साल claims आते हैं लोगों के, definitely. कार के भी है, घर के भी है. Um, So how these insurance companies get affected by the claim? because socho, let me break it down this way. Yeah. कह लो एक insurance company है, right? Hmm. And has, just to break it down, has 100 clients. Make it simple, 100 clients, ठीक है? But उस 100 clients में से 70 of those clients have claims going on. Claims है, ठीक है? So what makes you say that अगर वो 70 clients का claim चला है, right? Hmm. कि like it's not because of bad drivers, like, there's a reason that's going on, right? But वो insurance company को, they have to determine the payout they're giving to their clients Yeah. somehow, right? Yeah. So okay, let's take this insurance company called Aviva. Okay, Okay. take Aviva and put in Scarborough or Right. Toronto, right? Okay. It's not as cheap or as affordable. Right. But take Aviva and put it in Oakville. Okay. It's cheapest insurance you'll find in Yeah. Oakville, right? Because they have less claims in Claims Oakville. over there. They have more claims in Toronto, Scarborough, and whatnot, right? So they'll go determine based on that, like where do we have more claim ratio, what area, and then if there's less claim payout in a certain area, the insurance would be less there too, right? So again, your insurance is not determined based on only you. It's Yeah. based on where you live. Where you live. It's based on who you're living with. It's based on where and how and everything. You know, it's just a bunch of stuff. And again, like it's based on what you're driving, right? All Yeah. DWs realistically. Like it's another thing, man. It's one of those things where it's not simple. It's a really complicated thing. Like there's this thing called group insurance. Okay. Okay. Group insurance is basically, let's say, I explained it to almost every client of mine that has group insurance or that have knowledge with them. Yeah. Group insurance is, there's 10 people, Mhm. okay? Most insurance companies determine this way, most. Okay. There's 10 people, they'll put you in a group of 10 people. All of them have car insurance, okay? But if one of them gets into an at-fault accident or gets a ticket, his insurance will definitely go up. But so Okay. will the other people's insurance because you're part of that group. Right. So that group insurance is fixed. So if one person's insurance is going up, they have to average out and make everyone's insurance Everyone's go up. insurance go up. So that's why I say I'm like, don't go for those things. It may be cheaper sometimes, but if someone does get, you can't control what the other person's Right. driving. Guess that agla banda drive karta, right? So you can't control that, right? So it's better to just stay off it, man. Yeah, just because of other person, apparently वो आपकी insurance भी ऊपर चली हाँ जाएगी. कि bro पता थोड़ी कि अगला बंदा, you don't know the Yeah. other person. पता थोड़ी कैसा driver, you never know, right? सही में. And is there any real life example of any of your client or any story where insurance made the significant impact on the client's life? Yeah, man. A lot of man. Such a like I see a lot, and not to exaggerate. A lot of clients because one thing about insurance, or one thing about this is called service industry, right? One thing about this industry is that you get to meet a lot of people. Yep. You get to talk to a lot of people. You get to know their stories. You get to know what's their background and everything, right? So a lot of people, especially in Brampton and whatnot, you get to deal with a lot of those people too. The newcomers, man, they're first-time insurance and students. And I've been a student. I know the affordability of certain things is less. Banda itni luxury life nahi afford kar sakta as a student, you know, unless you're super rich, you know. Yeah. And not everyone's like that, okay? Right. So if you're on a budget, agar koi affordability kam hai, right? A lot of वो रास्ते ढूंढते हैं, right? कि यार जहाँ से भी पैसे बचते हैं बचाओ, you know. तो उन लोगों की जो स्टूडेंट्स की जब आप इंश्योरेंस हेल्प करते हो ना ब्रो, $10 बचाने में भी जो हेल्प होती है ना, वो आपका इतना लॉयल होता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ब्रो, जो स्टूडेंट्स हैं, द न्यू कमर्स, जो कहते हैं यार हमारे पास अफोर्डेबिलिटी थोड़ी नहीं है, तो आप जितना भी कर सकते हो मिनिमम किलोमीटर डाल सकते हो, नहीं तो जैसा भी है, यू नो, लाइक अगर आप कोई भी सोल्यूशन ढूंढ के कर सकते हो. एंड your responsibility as a broker, if someone says this to you, is to find the best deal, ठीक है?
लाइक आई वर्क विद 30 डिफरेंट कंपनीज, ओके. तो जब मैं कोड करता हूँ आई गेट 30 डिफरेंट कंपनीज कोड. मैं उनको महंगी वाली दे सकता हूँ, सस्ती वाली भी, लाइक इट्स योर चॉइस, राइट. सो जब एंड देन those clients are really loyal to you. They keep coming back to saying that, oh bhai sahab, वो VG to see, like you did my insurance cheap, you know. Yeah. I'm gonna come back to you. I'm gonna refer you. मैं अपने भाई का नंबर देता हूँ आपको, या मैं अपने भाई को आपका नंबर देता हूँ, उसकी भी इंश्योरेंस कर दो आप. तो वो चीज़ें ना ब्रो, वो आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करते हैं, पर उनकी भी कि यार लाइक यू नो वो अपना कार जो अफोर्ड कर सकते हैं चला सकते हैं, एंड ऊपर से वो they're getting to do what they want, right. तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं ऑब्वियसली. एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी स्ट्राइक करा है कि जब हम लीज पे घर लेते हैं तो आपको एक टेनेंट इंश्योरेंस मेंशन कर देते हैं कई बार एग्रीमेंट के अंदर, तो वो लेनी चाहिए या नहीं, और अगर किस वे में वो हेल्प करती है टेनेंट को? सो टेनेंट इंश्योरेंस का ये होता है कि जैसे आप होम ओनर्स हो, ठीक है, आपका अपना घर है एंड बेसमेंट आपने किसी टेनेंट को रखा है, राइट. आप इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे तो मेरे बेसमेंट कोई रहता है, राइट. इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी डज योर टेनेंट हैव इंश्योरेंस? यू से नो दे डोंट. तो वट एवर हैपन्स टू योर टेनेंट स्टफ इज नॉट कवर्ड. हाउस में जो होगा, बेसमेंट में ज़मीन पे जो होगा कवर्ड होगा, पर जो टेनेंट्स की अपनी कंटेंट होता है ना वो कवर्ड नहीं है. सामान जो या सामान हो गया, जो भी होगा ना, लाइक अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जो होती हैं वो कवर्ड नहीं है, ठीक है. ओके. अनलेस आप कहते हो हाँ मेरे टेनेंट के पास इंश्योरेंस है, और आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो, क्योंकि वो फिर टेनेंट की इंश्योरेंस कवर करेगी, राइट. कि एज अ टेनेंट आपको घर का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती ब्रो. आपको बस ये मिलता है कि अगर कुछ हो भी जाए, ठीक है, देन आपको थोड़ा सा मिलता है कि यार यू नो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे अगर आपने होटल में जाकर रहना है, एडिशनल लिविंग एक्सपेंस ऐसा होता है. बट इफ अ वॉल ब्रेक्स डाउन, राइट, you won't get money to fix it क्योंकि you don't own the place, right, you know. but तो ये होता है कि tenant is mostly covered for the अपना content सामान जैसे नहीं होता वो चीज़ें, ठीक है. तो अगर होम ओनर्स कहता है यार यस मेरे टेनेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है, राइट, तो इंश्योरेंस कंपनी देयर अ क्वेश्चनर होता है, फिल करना था, वो पूछेंगे कि अच्छा टेनेंट में इंश्योरेंस है, अगर है तो फिर पॉलिसी नंबर डालो, इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालो, ठीक है, नहीं है तो फिर why they don't have insurance because they don't require, ठीक है, जो भी है. फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि they will not be covered for this situation. तो इसलिए मैं कहता हूँ as a homeowner you should, tenant insurance expensive नहीं है पर वो लाइक $30 की आ जाती है, $30-40 की, $30-40 तो अफोर्ड कर ही लेते हैं, और टेनेंट में आप कौन सा अकेले कभी कभी मोस्ट लाइकली आप रूममेट्स के साथ होगे तो वो डिवाइड कर लो, so वो डिवाइड हो जाती है वो, अगर आप 3 या 4 लोग. but also so that's different too because most insurance companies say high tenant की अपनी इंश्योरेंस हो, ठीक है, पर आप अपना रेंट टेनेंट इंश्योरेंस डिवाइड करने लगे हो विद इन अदर रूममेट्स, यू हैव टू लेट इंश्योरेंस कंपनी नो कि ये उसे कहते हैं रूमर्स, ओके, कि ये इतने ज़्यादा लोग हैं, दिस इज हाउ मेनी पीपल आर लिविंग विद मी, तो यू नो लाइक यू गोटा लेट देम नो. इट्स मोर लाइक अ ग्रुप इंश्योरेंस. या क्योंकि इफ यू डोंट डिस्क्लोज देम, राइट, फिर you could get cancelled for fraud or misrepresentation. Exactly. So जो misrepresentation or fraud stays on your record for like 5 to 10 years, man. Yeah. And let's just talk about now medical in the Canada. Although everyone knows that most of the medical things are free in Canada, right? ऐसा बोला जाता है भाई. तो अब इसके अंदर फिर मेडिकल इंश्योरेंस की नीड कहाँ आ जाती है? या मेडिकल इंश्योरेंस की ये होती है कि सो मेडिकल इंश्योरेंस है ना, आप बोल रहे थे सबके पास यार ओहेप से कवरेज नहीं होती, ठीक है. टेक माई पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव यू माई पर्सनल एग्जांपल, दूर की तो दूसरी बात, पर माई पेरेंट्स डोंट हैव ओहेप कवरेज, ठीक है. they choose to get personal coverage first of all, more coverages, ठीक है, better coverages, एंड ऊपर से ओहेप में सब कुछ कवर नहीं होता, ठीक है. कोई ओहेप क्या चीज़ है, मतलब उसमें क्या होता है? ट्यूलियम में जैसे कोई मेडिसिन नहीं कवर होती, ठीक है. ट्यूलियम में एक प्लान है ओहेप का, ट्यूलियम प्लान, ओके. उसमें कोई मेडिसिन नहीं कवर होती, कि आप कह लो जैसे मिड डैश को जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, उनकी कोई मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, राइट, वो उनको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी. $50 की हो जाए, 20 की हो जाए, जितने की कह लो आप, ठीक है, वो अपनी पॉकेट से देनी पड़ती है, राइट. तो ओहेप भी तो आपको वैसे भी चार्ज करेगा क्योंकि टैक्स में से निकलता है ओहेप की, ठीक है, कॉस्ट. ओहेप इज अ टाइप ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस. ओहेप अंटेरियो की मेडिकल इंश्योरेंस है. अंटेरियो गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है वो है. ओहेप तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस, ठीक है. तो ओहेप में सब कुछ कवर नहीं होता है, राइट.
लाइक अगेन लाइक मेडिसिन होगी, कोई डिफरेंट चीज़ें, मसाज भी हो गए, पर आप अगर सन लाइफ फाइनेंशियल कोई भी डिफरेंट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज लेते हो, ठीक है, you get sometimes massage covered, therapy covered, ठीक है, most medicines are covered and Dental, whatnot. Yeah, eyes. you might have to, आपको शायद पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे, पर you're covered more. Okay. ठीक है, तो फ़ायदा obviously उसमें, and ऊपर से यार like not everyone qualifies for OHIP, like especially जो न्यू कमर्स आते हैं, सबके पास नहीं है, नहीं गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है, राइट? तो अगर कोई खुदा ना करे कोई आ जाए इमरजेंसी, बंदा तो फंस जाए, राइट? तो यस, वो बात आ गई ना कि यस यू माइट हैव, पैसे देने पड़ेंगे, आप कोई लोग लग्जरी भी समझते हैं, कोई लोग नेसेसिटी भी समझते हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट की इंश्योरेंस आना, आप न्यू कमर मैनेज कर सकते हो, देन फॉर श्योर, राइट? पर अगर आपके पास थोड़े से ओल्डर पेरेंट्स है, जहाँ कोई मेडिकल कंडीशन है कि आपको लगता है यार मेरी मेडिसिन नहीं इसमें कवर्ड, राइट? एंड एनी टाइम कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन, आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो, राइट, तो सेंस नहीं बनता, यू नो? तो अपनी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस बंदा ले, कि मेडिकल कौन सी भी मेडिकल लाइफ इंश्योरेंसेस, ठीक है, उनसे आप लो और बोलो यार लाइक at least my medicines are covered, at least you're covered, man. because almost क्या एक्सपेंस आता है मेडिकल इंश्योरेंस करवाने का per month? अगर देखी जाए एवरेज पे देखी जाए about 250 a month. 250 a month? Yeah, $300 उसके अंदर पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व होता है, पूरी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस per person. हाँ, पर ये मैं बोल रहा हूँ कि more of a mostly everything covered, like 270 में आपको मिल जाता है almost 90% of your medicines are covered, जो भी आप मेडिसिन लोगे 90% of it is covered, ठीक है, and then जो 10% है you might just have to pay out of your pocket, but वही होगा ना, you rather pay $10 compared to $100, right? तो वो 90% of your medicines are covered in that, massage is covered, ठीक है, therapy जैसे physiotherapy वो भी covered, ऐसी चीज़ें, which is important too, like कोई लोगों को मसाज की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की कभी ज़रूरत होती है, राइट? सो इस सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं इसमें, स्पेशली द बिगेस्ट थिंग इज ड्रग्स, जो कहते हैं मेडिसिन, राइट? तो वो सबसे बिगेस्ट थिंग विच इज़ कवर्ड, और नॉट एवरी मेडिसिन कवर्ड इन अंडर गवर्नमेंट इंश्योरेंस, राइट? आपका क्या तरीका है काम करने का? आप किस वे में काम करते हो? इंडिपेंडेंटली करते हो, किसी कंपनी के साथ करते हो, और क्या तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हो भाई? तो मैं ब्रोकर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, कमीशन, and I work with Billiard Insurance Group, okay? It's the biggest and fastest growing brokerage in Canada. Okay. Not only in Ontario, like Ontario में तो उनकी तो है 80 कुछ locations तो already हैं, पर Canada में पूरे is the biggest brokerage in Ontario and Canada, ठीक है? Okay. So the reason I work with them is obviously you get to they do take part of your compensation salary, get a commission, right? Yeah. पर उसका ये होता है you get to use the resources, ठीक है? कंपनीज के साथ पार्टनरशिप, not every broker has partnerships with all companies, ठीक है? तो वो resources उनका सिस्टम हो गया, पॉलिसीज करने वाला सिस्टम हो गया, you know, and what not, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि you're getting access to advanced level system, and you're also getting access to almost 90% of insurance companies in Ontario, which is much more than what you would be able to do if you weren't to go with such a big brokerage, right? So पहली बात वो है. दूसरी है, I did start off when I was early, I still go, but when I was in my early brokerage, broker at time, dealership पे जाना, right? Different dealerships, new dealerships, used dealerships, and whatnot. Dealerships को hit करना कि कहना hey, like, क्योंकि आप सोचो एज अ ब्रोकर, जब आप शुरू करते तो किसको पता होगा ये ब्रोकर? फैमिली को पता होगा, फ्रेंड्स को पता होगा, राइट? उसके अलावा चलो वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाए, ठीक है, वो अपने दोस्तों अपनी फैमिली को बताते हैं, ठीक है, पर वो तो फिर लिमिटेड ही होगा ना, लिमिटेड हो गया, 20-30-40 लोगों को पता होगा, राइट? तो वो लिमिटेड हो गया। पर आप अगर जैसे अपनी नेटवर्क एक्सपैंड करते हो, ठीक है, डीलरशिप पे जाते हो एंड वन नॉट, आप वो अगर कोई आपको लीड भेजता है, क्लाइंट भेजता है, ठीक है, कि यार ये बंदा अपनी कार उठाने लगा है अगले हफ्ते, इसकी इंश्योरेंस कर दो, आप वो बंदे की इंश्योरेंस करते हो, वो आगे अपने दोस्त को बताता है, एंड देन शुरू में डीलरशिप तो होता है, बट देन इट बिकम्स वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, and then through word of mouth you get to meet a lot of different people from different field. I have a lot of clients that are in real estate,
a lot. And then I have mortgage brokers that are clients. मेरे clients ये भी कि जो dealership पे भी काम करते हैं, right? Yeah. तो अगर कोई काम होता है obviously you help them out, and then if you need something they help you out, right? Yeah. तो वो main thing insurance में है कि how to make connections and how to talk to people. Right. So again it goes back to how why I got into this. I did HR, human resources, Yeah. है ना? Human resource management में you need to know how to talk to people. How to talk to people, yeah. तो confidence जो होता है to back yourself up, Present and yourself. present yourself, everything, you know, like who are you, like Yeah. मैं क्यों, why should I take it serious, मैं तुम्हें serious क्यों लूँ? That got converted into insurance क्योंकि मुझे तो already experience था कि लोगों से कैसे बात करनी है, Right. कैसे थोड़ा संभालना है, different kind of people, different experiences, different ways, right? तो insurance में ऐसे हो गया ना कि different connections बनते हैं, but you meet different people, man. You don't meet one specific personality. You will meet an uncle G who is really calm, Right. and then you will meet a young guy who Young is guy. really angry. Angry, yeah. So you gotta be able to relate to both, be able to calm them down both, Right. and then just be able to understand and come up with a solution, Right. right? So it's just one of the things. If you are planning to get into insurance, right, for sure. Yeah. It's not simple, but yet it's simple in the sense that yes, it's simple because you just gotta get your license for sure. That's For simple. sure, yeah. That's simple, but once you get into insurance, it's not simple in the sense that you gotta get to know people. You gotta expand your network. You gotta get out of your shell. They say, right? Right. You gotta be more confident. You just gotta be a different person. You gotta be from an introvert to an extrovert. Exactly. Because You need to be, because you have to deal with the people all the time. हाँ भाई, because सुनो देखो कि वही बात होगी ना कि अगर लोगों को पता नहीं आप इंश्योरेंस करते हो तो आपको काम कैसे मिलेगा? काम कैसे मिलेगा? क्योंकि और लोग आपको फैलाना पड़ेगी ये बात. वहाँ जैसे बंदा कॉफ़ी लेने जाता है, बंदा वहाँ पे कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक अप कर देता है कि हाँ मैं जैसे इंश्योरेंस करता हूँ, यू नो. तो कोई भी यार ऐसे कोई भी यू गोटा बी आउट ऑफ योर शेल, कॉन्फिडेंट होने के यार मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, यू नो. एंड ये नहीं कि लाजमी हमेशा 24/7 सोशल हो, नो, ऐसा कुछ नहीं, लाजमी नहीं है. पर जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी होता है क्या यार, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, यू नो. इंश्योरेंस में ये कि कनेक्शंस बनाना, जस्ट गेटिंग टू नो पीपल, मीटिंग पीपल, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, मैन. या एंड भाई इतना टाइम हो गया आपको इसमें काम करते हुए, सो हाउ यू प्रोवाइड द advice or consultancy to your clients while selecting a particular insurance? छोटे मोटे सवाल पूछता कि कार न्यू है, यूज्ड है, लाइसेंस कौन से चीज़. पर जब इंश्योरेंस कवरेज समझाने में आता है कि आप उनको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या है इंश्योरेंस का, ठीक है, उनको मैं 2 सॉल्यूशंस देता हूँ. जनरल इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द कार, उनको मैं हाँ होम का भी कह लो आप, ठीक है, मैं उनको 2 इंश्योरेंस 2 टाइप्स के देता हूँ, ठीक है. होम का ले लेते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल, राइट. कोई कहता है यार आई ओन अ हाउस, मैंने इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है. तो ऑब्वियसली मैं उनसे पूछता हूँ कि लाइक आप आर यू दी सोल ओनर, आर यू दी ओनली ओनर ऑफ द हाउस. कहते हैं यस मेरे नाम पे है, सब कुछ ठीक है, डन हो गया. पेड ऑफ अ हाउस, यस पेड ऑफ अ हाउस, ठीक है. तो हाउस कब बिल्ड हुआ था? 1985. ओके. रेनोवेट कब हुआ था? ओ रेनोवेट तो मैंने 5 साल पहले किया है. अच्छा क्या रेनोवेट किया? इलेक्ट्रिकल रेनोवेट किया था, प्लम्बिंग किया था, राइट. इस चीज़ होगी, उससे पता चल जाएगा तो क्या चीज़ हाँ, उससे पता लग जाता है है कि घर कितना पुराना है, रेनोवेट कब हुआ था. और कंटेंट अमाउंट तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे कर लेता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा घर है, ठीक है. सिस्टम में ऐसा है. तो जब आप इंश्योरेंस बोल करते हो, होम की इंश्योरेंस, हाउस ओनर की इंश्योरेंस जो होती है ना, होम ओनर्स की इंश्योरेंस, उनकी वो जेनेरिक इंश्योरेंस होती है, ठीक है. क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवा सकते हो, पर शुरू होती जेनेरिक बेसिक चीज़ पे है. जैसे हो गया लाइबिलिटी 1 मिलियन होगी, पर मैंने आपको जैसे बोला ना गारंटीड बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है. तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक होम ओनर्स के इंश्योरेंस में वो ऐड करूँ, ठीक है. गारंटीड बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि पता नहीं यार कभी भी घर को कुछ हो सकता है, कभी भी पता थोड़ी आजकल नहीं पता होता, कोई बता के प्रॉब्लम नहीं आती है कभी. तो एग्जैक्टली राइट. तो हमेशा ये होता है कि यार जितने कवरेजेस, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फॉर द बेटर, राइट. तो गारंटीड बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर कुछ हो जाए घर को, योर कवर्ड इफ इट हैज टू बिल्ड अप, राइट, वो डालता हूँ. बाद में मैं उनको बोलता हूँ कि फायर डिपार्टमेंट चार्जेस आपको डालनी है, इट्स इंक्लूडेड इफ़ यू वांट, बट आई कैन रिमूव, ठीक है. कहते नो फायर डिपार्टमेंट चार्जेस हम डाल देते हैं, यू नो, इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, ठीक है. तो ऊपर से मैं उनको मेडिकल भी उनको समझाता हूँ कि अच्छा लाइक डू यू वांट द केयर गिवर बेनिफिट, अगर कुछ ऐसा चाहिए कि खुदा ना करे कुछ हो जाए, जहाँ कोई नर्स वगैरह नहीं होती, कुछ भी होता है, वो भी मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ. और
होम ओनर्स का यार थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू ऑटो. एंड देन सेम थिंग कमर्शियल पे ज़्यादा, कमर्शियल थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कमर्शियल थोड़ी सी बेसिक नहीं, क्योंकि कमर्शियल होती है कि हर बिजनेस पे डिफरेंट इंश्योरेंस होती है. एक बार्बर शॉप की एक इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है कुछ और हो कंपेयर टू सकती है। ए ग्रोसरी स्टोर, Yeah. ठीक है, और रेस्टोरेंट, ठीक है. कि बार्बर शॉप पे ये होता है यार हमें बस प्रोटेक्ट करना है अपने कैश को या ऐसे, Yeah. पर ग्रोसरी स्टोर या रेस्टोरेंट को होता है हमें प्रोटेक्ट करना है अपने खाने को, यू नो, फ्रीजर्स Like को. हमारे जो टेबल है, चेयर्स है, या जो तो भी लाइक वो assets हमारे जो अंदर डिफरेंट जो चीज़ होती पड़े है. हुए हैं तो property होम की में. थोड़ी सी ज़्यादा कंपेयर टू कमर्शियल थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है. Yeah. right? पर कमर्शियल की मोर ऑफ स्पेसिफिक फील्ड में होती है कि अच्छा, यू नो, कितने सालों से क्या आपको चाहिए. अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप डिलीवरी करोगे, अगर नहीं करोगे ठीक है, डन हो गया. डिलीवरी करोगे तो आपकी कार की भी कमर्शियल इंश्योरेंस करनी पड़ेगी. Oh. तो इस तरह की चीज़ होती हैं, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट विद मिस्टर हामिद. एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है अपनी इंश्योरेंस से रिलेटेड, चाहे वो टेनेंट इंश्योरेंस हो, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, आप बिल्कुल इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं सारी की सारी इनकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी है. आप जाइए, उनको कॉल करें, मैसेज करो एंड अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो. और अगर आपको भी कोई इंश्योरेंस चाहिए हो अपनी गाड़ी की, या आपको टेनेंट की चाहिए हो, या किसी भी रिलेटेड में इंश्योरेंस में आपको कोई डाउट आ रहा हो, आपको कंसल्ट करना हो, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं. एंड इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, और जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो सो डैट आप रील्स देख सको इस पॉडकास्ट की. एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में. सी यू, बाय.